Good evening, dear students. Welcome to Matrix DigiLearn, and today we'll discuss about the computer awareness. And the questions are on your screen. The first question for you. Question number 300. We have covered some parts of this MCQ, and today we'll discuss the remaining parts of this question. The first question, question number 300. This question is the difference between people with access to computers and those without this access is known as. The difference between people with access to computers and the internet and those without these access is known as. The options are digital divide, option 2, internet divide, option 3, web divide, option 4, broadband divide, option 5, none of these. If anyone knows the right answer, then simply type the message, give the response by chat. The option 1, S, that is known as digital divide. Question number 301, DSL is example of dash connection. DSL is example of dash connection. Option 1, network. Option 2, wireless. Option 3, slow. Option 4, broadband. Option 5, none of these. Which option is the right answer? You can give the response by chat. DSL is example of dash connection. Digital subscriber line, DSL. It would कोण? Anyone? The right answer is option 4, that is a broadband connection. इंटरनेट रो हमरे बहुत प्रकार कनेक्शन करा जाए, जेमति के डायल अप कनेक्शन, direct connection. So DSL is one type of broadband connection. Next question for you. Dash is a study of molecules and structures whose size ranges from 1 to 100 nanometers. Anyone give the right answer? Dash is the study of molecules and structures whose size ranges from 1 to 100 nanometers. Nanoscience. Option 2, microelectrode codes, computer forensics. Option 4, artificial intelligence, and none of these. Anyone can give the right response? The right answer is option 1, nanoscience. Next question for you. The name for the way which computers manipulate data into information is called. The name for the way with which computers manipulate data into information is called. Option 1, programming. Option 2, processing. Option 4, organizing. Option 3, storing. And last option is none of these. Which option is the right answer? Anyone can give the right answer? This thing is known as. Anyone can give the right answer? The right answer is processing. से कहवा कथा जे कंप्यूटर रे कौन से जिनसडा जहा कि डाटा को मैनिपुलेट करे बा डाटा को प्रोसेसिंग बा एडवांसमेंट कला परे सेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन को जनरेट हेथाय बा कंप्यूटर रे आमे किछि जदि डाटा फीड करूचे से डाटाडा इंफॉर्मेशन को परिवर्तन होबा पई हेले इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट होबा पई हेले से एक्टिविटीटा कंप्यूटर एक्चुअली कोन बोली कहंती से एक्टिविटीटा को एक्चुअली कंप्यूटर कहंती प्रोसेसिंग
से जगह रे कंप्यूटर तार एरिथमेटिकल पावर बा लॉजिकल पावर व्यवहार करी फीड करा जाइथिबा डाटा को यूजफुल बा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करि पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आफ्टर ए पिक्चर has been taken with a digital camera and processed appropriately, the actual print of the picture is considered as। तमे गोटे पिक्चर को टेकन कल, गोटे पिक्चर को नेल डिजिटल कैमेरा रे एंड ताको प्रोसेसिंग कला अप्रोप्रिएट वे रे, से जो पिक्चर टाको अप्रोप्रिएट वे रे प्रोसेसिंग कल, ताले से जो एक्चुअल प्रिंटा बाहरिबो पिक्चर रो सेटा को कोन बोली एक्चुअली हमें एग्जैक्टली बोली कहू। डाटा, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, none of these. Which option is the right answer? Option 1 data, option 2 output, option 3 input, option 4 process, option 5 none of these. Which option is the right answer? Option 2 is the right answer. ताको output बोली कहंती। Okay, next question for you. A command that takes what has been typed into the computer and can be seen on the screen and sends the printer for output on paper. A command that takes what has been typed into the computer and can be seen on the screen, sends by the printer for output on a paper. That activity is known as option 1 print, option 2 return, option 3 jump, option 4 attention, and option 5 none of these. Option 1 print is this is the right answer. जदि कंप्यूटर कोनोसी डाटा नौची जहा कि हमें टाइपिंग करछे कंप्यूटर रे ताकू जदि हमें पुनी प्रिंटिंग करिया को चाहिबा दैट एक्टिविटी इज नोन एज प्रिंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द की व्हिच लेट्स यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, द की which lets you exit a program when pushed. Option 1 arrow key, option 2 space bar, option 3 escape key, option 4 return key, and option 5 none of these. Yes, option 3 is the right answer, that is known as escape key. जदि आमे कीबोर्ड रु escape key को प्रेस करूचे ताहले गोटे प्रोग्राम को आमे फोर्सिबली बंद कर दे परिबा बा ताकू राइट वे जदि न होइछि आमे बंद कर दे परिबा एस्केप करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ एन ओएस टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम। द एबिलिटी ऑफ एन ओएस, गोटे ओएस बा ऑपरेटिंग सिस्टम रो एबिलिटी अछि टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम, गोटे समय रे अनेक गुडा एप्लीकेशन को रन करिबा। दैट एक्टिविटी इज नोन एज ऑप्शन 1 मल्टीटास्किंग, ऑप्शन 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, option 3 multi-user computing, option 4 time sharing, and option 5 is none of these. That activity is known as multitasking. Option 1 is the right answer, that is known as multitasking. एक रु अधिक काम को गोटे समय रे हमें करि परिबा। Next question for you, which of the following statements best describes the batch method of input? Which of the following statement best describes the batch method of input? Option 1 data is processed as soon as it input, option 2 data is input at the time it is collected, option 3 data is collected in the form of source documents placed into groups and then input to the computer, option 4 source documents are not used, and last option is your none of these. Which option is the right answer? Anyone can give the response? Option 3 is the right answer. Option 3 is the right answer. Data is collected in the form of source of documents. No, option 2 is wrong answer. Option 3 is the right answer. Data is collected in the form of source documents placed into groups and then input to the computer. 309. The benefit of using computer is that option 1 computers are very fast and can store huge amount of data, option 2 computers provide accurate output even when input is incorrect,
Option 3, computers are designed to be flexible, inflexible, and option 4, all of the above, and option 5, none of these. The benefit of computer is that computer actually benefit ta kon? Who option da bhitor right answer hobo? Anyone can give the right answer? The option 1 is the right answer. The option 1 is the right answer. Computers are very fast. Computer hochi bahut fast and can store huge amount of data. Ebo bahut udai data ko store kari pare. So option 1 is the right answer. Au jaha achi seta etata thik lage nahi. Next question for you. The function of CPU is CPU ra actually function da kon? The function of CPU is option 1, to provide external storage of text, to communicate with the operator, to read, interpret, and process the information and instruction, to provide a hard copy, and option 5, none of these. Which option is the right answer? Actually, CPU ra function da kon? Anyone can give the right answer? Option 3 is the right answer, to read, interpret, and process information and instruction. CPU रा काम होला किछि इंफॉर्मेशन आमे जहा देइछे ताकू रीड करिबा, देन ताकू इंटरप्रेट करिबा एंड तापर ताकू प्रोसेसिंग करी यूजफुल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करिबा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ताले ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल? What characteristics of read-only memory makes it useful? Option 1, ROM information can be easily updated. Option 2, data in ROM is non-volatile, that is, it remains there even without electrical power. Option 3, ROM provides very large amount of the inexpensive data storage. Option 4, ROM chips are easily swapped between different brands of computers, and none of these. Which option is the right answer? Anyone can give the response by chat. Option 2 is the right answer. Data in ROM is non-volatile, that is, it remains there is even without electrical power. साधारणतः आमे कहिथाउ जे कंप्यूटर को जेतेबेले कोनसी इंस्ट्रक्शन दिया जाए, कंप्यूटर रा प्राइमरी मेमोरी डाटा गुडा स्टोर हुए. तो कंप्यूटर रा प्राइमरी मेमोरी होची दुईटा, गोटे होची RAM एवं गोटे हला ROM. बट RAM माने होची रैंडम एक्सेस मेमोरी. RAM रे लेखा जायतिबा इंफॉर्मेशन गुडा को बा फीड करा जायतिबा इंफॉर्मेशन गुडा को जने रीड भी करि परिबो, राइट भी करि परिबो, बट दैट इज टेम्पररी इन नेचर. कंप्यूटर स्विच ऑफ होबा सहित RAM रे थिबा इंफॉर्मेशन गुडा को नष्ट हो जाय. बट ROM जोटा कहउछ तमे रीड ओनली मेमोरी, ROM इज प्री प्रोग्राम्ड एंड ROM रे इंटरफेस रे लेखा जायतिबा प्रोग्राम गुडा को कलेक्टिवली आमे फार्मवेयर बोली कहू. एंड से जो ROM रे थिबा इंस्ट्रक्शन गुडा को CPU को इंस्ट्रक्शन पास करे जे CPU रे केमिति हमर बूटिंग ऑफ होबा दरकार, कंप्यूटर केमिति स्टार्टिंग होबा दरकार. सो ROM रे थिबा इंटरफेस रो प्रोग्राम ता नॉन वोलेटाइल. कंप्यूटर स्विच ऑफ हेले भी से इंस्ट्रक्शन गुडा ता देरे सेमति फीड के थाए. That is collectively of software programs on written on ROM is known as firmware. Okay, next question for you. Dash is the process of carry out commands. Dash is the process of carry out commands. Option 1, fetching. Option 2, storing. Option 3, decoding. Option 4, executing. Option 5, none of these. Which option is the right answer? Anyone can give the response? Which option is the right answer? Option 4 is the right answer. That is known as executing. Dash is the process of carry out commands. Commands को बा कंप्यूटर किछि ग्रहण कला परे ताकु जतले carry out करिवो बा ताकु जतले आगु को नबो, that activity is known as executing. माने सेटाकु से execution कला. Next question for you. Which of the following peripheral devices displays information to user? Which of the following peripheral devices displays information to a user? Option 1, monitor. Option 2, keyboard. Option 3, secondary storage device. Option 4, scanner. And option 5, none of these. एमानक भितरु कोटा को peripheral device टा information टा user को display कराए. Anyone can give the response?
Is option 1 is the right answer, that is known as monitor. Monitor द्वारा आमे कोन करू ना इंफॉर्मेशन गुडा को जहा कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग करथे डिस्प्ले करै थाए. Next question for you, the physical components of computer system is known as, the physical components of a computer system is called option 1 software, option 2 hardware, option 3 network, option 4 open source, option 5 none of these. Anyone can give the response? जो पेरिफेरल डिवाइस टा कंप्यूटर सिस्टम रे सब कंपोनेंट्स रूपे यूज करा जाए, जो पेरिफेरल डिवाइस गुडा को सेगुडा को एक्जेक्टली हमें कोन बोली कहू. ऑप्शन 2 हार्डवेयर, सेगुडा को गोटे हार्डवेयर कंपोनेंट्स बोली कहंती. कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, जहां भी कंप्यूटर सहित कनेक्टेड हुए ताकू गोटे गोटे हमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स बोली कहू. बट से पेरिफेरल डिवाइस गुडा को गोटे गोटे हार्डवेयर पार्ट्स बोली कहू. Next question for you, which of the following is a graphical representation of an application? Which of the following is a graphical representation of an application? Option 1 Windows 95, option 2 Windows Explorer, option 3 icon, option 4 taskbar, and option 5 none of these. Which option is the right answer? Anyone can give the response, then give it by chat. Yes, option 3 is the right answer, that is known as icons. Icons are the small pictures view on a Windows desktop. आमे जब कौन सी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करू, डेस्कटॉप ऊपर छोटे छोटा बटन आकार पिक्चर्स गुडा देखिया को मिले. दैट स्मॉल पिक्चर्स आर नोन एज द आइकन्स. ए आइकन मध्ये तीनटा कैटेगरी थाए, गोटे सिस्टम आइकन्स, गोटे शॉर्टकट आइकन्स, आ गोटे फाइल फोल्डर एंड डॉक्यूमेंट्स आइकन्स. तीन प्रकार आइकन देखिया को मिले. से कथा कहितला जे कोन सोटा एप्लीकेशन रो गोटे आइकन आकार प्रेजेंट करा जाय जो जिंसटा सेटा ही आइकन हमर कहै छै. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ए फील्ड इज रिलेटेड ए ग्रुप ऑफ, a field is a related group of option 1 records, option 2 files, option 3 characters, option 4 cables, option 5 none of these. Which option is the right answer? A field is a related group of records, option 2 files, option 3 characters, option 4 cables, option 5 none of these. Anyone can give the response? That right answer is option 3 characters. ताले जो हमरो गुडे फील्ड रे हमें किछि जिंसोडा का एंट्री करू, से मे बी लेटर होई पारे, मे बी सेटा नंबर होई पारे, नंबर सहित लेटर मिसे की दिया जाई पारे. That all are known as characters. Okay, next question for you, to restart a computer gas key is used. Very very interesting question, practicalized question. To restart a computer, dash key is used. Option 1 del plus control, option 2 backspace plus control, option 3 control plus alt plus del, reset none of these. Option 4 is the right answer. To restart a computer, control alt delete, जदि तीनटे जाक की को एका समय मिसे प्रेस करा जाए ताहले हम कंप्यूटर ता रिस्टार्ट हेते. बेले बेले कंप्यूटर रे कोनसी प्रोग्राम चलीबा जदि प्रॉब्लम हुए सेतबेला ऑल कंट्रोल डिलीट मारी से प्रोग्राम टाको तमे एंड टास्क करि परिबो बा से प्रोग्राम टाको फिनिश करि परिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग इंफॉर्मेशन इन ए फाइल ऑन ए मैग्नेटिक डिस्क और इन ए कंप्यूटर्स मेमोरी so it can be used later. That activity is known as option 1 store, option 2 shift, option 3 shift, option 4 center. Which option is the right answer? Anyone can give the right answer? Right answer is option 1 store. ताले हमें कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करिबा को ले मैग्नेटिक डिस्क रे सेटा को स्टोर करिथिबा जदी ताहाले हमें सेटा एबुल माने बा हमें सेटा सक्षम होई परिबा परवर्ती मुहूर्त रे ताको यूज करिबा पई बा परवर्ती मुहूर्त रे ताको व्यवहार करिया पई से जो इंफॉर्मेशन रा को मेमोरी रे रहिबा को से एक्टिविटी रे को स्टोर बोली कहै छै. सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ combining a document from memory to a storage medium, making
changes to a document's exiting content, changing the appearance or overall look of a document, developing a document by entering text using a keyboard, and none of each. Option 1, option 2, option 3, option 4, option 5. Which is the right answer? Option 1 is the right answer. Combine the document from memory to a storage device. ताले सेटा एक्चुअली कंपाइंग हो जाइछि, दैट इज कॉपिंग. कॉपिंग माने होछि गोटे जिंस को हमें कॉपी करि परिबा, माने ताकू मेमोरी ने के रखि देई परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. प्रिंटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड dash exists physically and is more permanent form output than that presented on a display device. Option 1, soft copy. Option 2, hard copy. Option 3, carbon copy. Option 4, disk copy. And option 5, none of these. Which option is the right answer? That activity is known as hard copy. Printed information, आमे गोटे कागज ऊपर गोटे जिंस को छापुचे बा कागज ऊपर गोटे जिंस को प्रिंट करा होची. एक्चुअली से जो परमानेंट आउटपुट को आमे छापी देले बा परमानेंट जिंसटा पेपर छापी ही गला, सेही एक्टिविटी को आमे प्रिंटर रे बाहर थिबा जिंसटा को आमे गोटे कहलु जे एते हार्ड कॉपी बाहरी गला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. To find a saved document in the computer's memory and bring it off on the screen to view is called. To find a saved document in the computer's memory and bring it use of the screen and view is called. आमे कंप्यूटर रे गोटे सेव्ड डॉक्यूमेंट अछि एंड कंप्यूटर रो मेमोरी को आमे ओपन करिबा को पडुछि, ताले सेही जो जिंसटा को स्क्रीन रे डिस्प्ले करिबा को एग्जैक्टली आमे कोन बोली खो. ऑप्शन 1, रिवर्सिंग. Option 2, returning. Option 3, retrieving. Option 4, returning. Option 5, none of these. Anyone can give the response? Then give it by chat. The right answer is option 3, retrieving. ताले कोडे सेव्ड डॉक्यूमेंट अछि कंप्यूटर रे एंड आमे सेटा को मेमोरी रो एक्सेसिंग करबा को चाहू छे, मेमोरी रे कोन स्टोरेज देखिबा को चाहू छे. एक्जैक्टली कंप्यूटर क्षेत्र जो टर्म ता यूज करा जाय ताकू कहते रिट्राइविंग इनफॉरमेशन. रिट्राइव माने पुनरुद्धार करबा. गोटे इनफॉरमेशन को हमें स्टोर करथिले एंड से इनफॉरमेशन को अगेन हमें फिटेबा. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द इंटरनेट इज ए सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर. ऑप्शन 1, सॉफ्टवेयर बंडल्स. ऑप्शन 2, वेब पेजेस. ऑप्शन 3, वेबसाइट. ऑप्शन 4, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. ऑप्शन 5, नॉन ऑफ दिस. Which option is the right answer? Internet is a system of. The right answer is option 4, interconnected network. मु तुमको कहितली भी केबे इंटरनेट मींस इंटरनेशनल नेटवर्क, द लार्जेस्ट नेटवर्क. इंटरनेट भितरे हमें अनेक गुडा नेटवर्क को कनेक्शन करी रखिताउ. लान वान म्यान टैन सब इंटरनेट भितर रही पारे, बट इंटरनेट ए सब भितर न थाए. तेणुकरी इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स scattered all over the world. So option 4 is the right answer, interconnected network. नेट माने होची जाल, जोठी जाल सदृश काम हुए. पृथ्वी रे जेकोन से गोटे कंप्यूटर थाउ ना काहे कि आउ गोटे कंप्यूटर सहित से इजीली कनेक्टेड हो जाई परिबो थ्रू इंटरनेट मीडियम. So internet is the world's largest computer network, that is interconnected networks. Next question for you. Code consisting of bars and lines. Very interesting question. Code consisting of bars and lines of varying width or length that is computer readable is known as. Code consisting of bars and lines of varying widths and lengths that is computer readable is known as. Option 1, an ASCII code. Option 2, a magnetic tape. Option 3, an OCR scanner. Option 4, a barcode. Option 5, none of these. The right answer is option 4. ताको barcode बोली कहंदी. Code consisting of lines. सेतरे विभिन्न लाइन पडिथिबो. कोडा गोटे मोटा लाइन विड्थ रो, कोडा गोटे सरू विड्थ रो लाइन पडिथिबो एंड सेही जो गुडा को किछि किछि कोड को रिप्रेजेंट करे, किछि किछि जिंस को रिप्रेजेंट करे. हमें जे कोनसी जिंस भी किनुथिबा देखुथिबा सेतरे हमर अनेक गुडाए गार गार पड़ी थाए एंड दैट गार गार
बा से जो लाइन गुड़ाक से प्रोडक्ट रो गोटे डिटेल इनफॉरमेशन दे थाए ता प्राइस कोन ता क्वालिटी कोन ता क्वांटिटी कोन तो आमे सेटा जानि परिबा नहीं बार कोड रीडर जतबेले ता ऊपर पकई दिया जिवो तो बार कोड से गुड़ाक एप्रोप्रिएट वे रे रीड करी ता इनफॉरमेशन को रिटर्न दबो सो दैट डिवाइस बा दैट थिंग्स से जो लाइंस गुड़ाक ताको बार कोड बोली कहै छै ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए डैश इज a unique name that you give to a file of information a dash is a unique name that you give to a file of information option 1 device letter option 2 folder option 3 file name option 4 file name extension option 5 none of these which option is the right answer anyone can give the response the right answer is option 3 that is known as file name से कहया कथा गोटे यूनिक नेम यार गोटे नाम देले आ गोटे पुनी चेंजिंग करी गोटे नाम दबा को पड़िबो तो आमे कोनसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करबा को हेले ताको एक्चुअली कोन कहै छै जे कोनसी एप्लीकेशन तमे जिंस को छै ताको गोटे फाइल बोली कहंती ताले से जो यूनिक नेम को असाइनमेंट करा जाय ताको एक्चुअली हमर गोटे फाइल नेम बोली कहंती ऑप्शन 3 is the right answer next question for you what is an email attachment what is an email attachment option 1 a receipt sent by the recipient a separate document from another program sent along with an email message a malicious parasite that feeds off your messages and destroys the contents a list of CC or BCC recipients none of these which option is the right answer option 2 is the right answer that is known as a separate document from another program sent along with the email message सहित अन्य गोटे document को पठेबा that is known as email attachments that document may be a file or a Word document that document may be a spreadsheet application that may be a sound file that may be a video file whatever may be next question for you which of the following are all considered advantages of email which of the following are all considered advantages of email option 1 convenience speed of delivery generality and reliability option 2 printable global and expensive option 3 global convenience and Microsoft owned option 4 slow delivery reliable global and inexpensive option 5 none of these which option is the right answer option 1 is the right answer that is convenience माने भरोसा योग्य विश्वास योग्य speed माने होची बहुत शीघ्र जाए and generality जो कोनसी जगह रे भी गोटे यूजर थिले आ ईमेल आईडी फिटे की असेसिंग करि परबो एमति नाही जे मो भारत रे गोटे लोक अछि एंड से भारत रो लोक रशिया रे गोटे लोक पाखो पठौची ता माने से लोक जदी रशिया रे न थाई की भी जदी से इंग्लैंड रे भी थिबो ताले तार ईमेल आईडी रे मध्य से फिटे दे परिबो दैट एक्टिविटी इज नोन एज जनरलिटी रिलायबिलिटी माने एटा होची सुइटेबल बा जोटा इकोनॉमिकल मध्य ताले प्रथम कैरेक्टरिस्टिक्स बा प्रथम जिंसडा ईमेल पई होची संपूर्ण प्रयोज्य नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू e-commerce allows companies to option 1 issue important business reports option 2 conduct business over the internet option 3 support decision making processes option 4 keep track of paper based transactions option 5 none of these which option is the right answer option 2 is the right answer conduct business over the internet e-commerce माने हला बिजनेस को हमें कंडक्ट करिबा बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंप्यूटर एंड द हमर इंटरनेट रो यूज करी ताले ई-कॉमर्स अलाउज यू टू कंडक्ट बिजनेस ओवर द इंटरनेट नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू in a client server model a client program in a client server model a client program option 1 asks for information option 2 provides information in files option 3 shops software files to other computers option 4 distributes data files to other computers option 5 none of these which option is the right answer anyone can give the right answer option 1 is the right answer
asks for information ताले हमर क्लाइंट सर्वर रो मॉडल रो काम होला से किछि इंफॉर्मेशन पाइबा पई पचारे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू computers manipulate data in many ways and this manipulation is called computers manipulate data in many ways and this manipulation is called option 1 utilizing option 2 batching option 3 upgrading option 4 processing and option 5 none of these which option is the right answer anyone can give the right answer option 1 utilizing option 2 batching option 3 upgrading option 4 processing option 5 none of these anyone can give the response option 4 is the right answer that thing is known as processing next question for you which of the following is an example of optical disc emanako bitaru kouta oda optical disc ra example option 1 digital versatile disc or a DVD option 2 magnetic disc option 3 memory disc option 4 data bus disc option 5 none of these which option is the right answer option 1 is the right answer DVD जहा को कि आमे ओटा ऑप्टिकल डिस्क बोली को ओटा राउंडेड डिस्क राउंडेड प्लास्टिक कोटिंग ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड रो कोटिंग दिया जाइथे प्लास्टिक इंटरफेस रो that rounded thing is known as digital versatile disk or optical disk next question for you another word of CPU रो another word टा कोन बहुत ही भला जिंसडा CPU को अदरवाइज आ को ना रे कहै जाय ऑप्शन 1 microprocessor option 2 execute option 3 microchip option D decoder option 5 none of these option 1 is the right answer ताको microprocessor बोली कहंती next question for you a menu consists of list of commands option 2 data option 3 objects option 4 reports option 5 none of these which option is the right answer anyone can give the right answer option 1 is the right answer that thing is known as commands okay next question for you a command to get a file you worked on from the memory where it was stored option 1 close option 2 delete option 3 open option 4 get it option 5 none of these which option is the right answer the right answer is option 3 open गोटे कमांड जहा कि आम मेमोरी थिला बा स्टोरिंग हेकी थिला आमे ताको एक्सेसिंग कले option 3 is the right answer that thing is known as open next question for you a dash is collection of data that is stored electrically as a series of record in a table option 1 spreadsheet option 2 presentation option 3 database option 4 web page option 5 none of these a dash is collection of data that is stored electronically as a series of records in a table option 3 is the right answer that is known as database ताले डाटा गुडा को जोठी इलेक्ट्रिकली मेथड रे स्टोर करा जाय कंप्यूटर रे सेटा को नो दैट इज नॉट वन स्प्रेडशीट रॉन्ग आंसर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर तो डाटाबेस ताको कहंदी डाटाबेस रे ही इंफॉर्मेशन गुडा को गोटे जगह रे स्टोर करा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए सॉफ्टवेयर टूल दैट enables a user to interact with a computer for specific purpose and known as option 1 hardware option 2 network softwares option 3 sharewares option 5 option 4 applications and option 5 none of these which option is the right answer anyone can give the response the right answer is option 4 that is known as applications okay next question for you what is the shape of a CD गोटे CD रो shape टा कोन गोटे CD रो आकारडा कोन quadrilateral rectangular circular hexagonal and none of these
गोटे सीडी रो आकारटा कोन एक्चुअली कंपैक्ट डिस्क जोटा कहूचे आमे तार शेपटा कोन ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर सर्कुलर सेटा गोटे राउंडेड मटेरियल टा राउंडेड डिस्क टा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस वेरी कॉमन थिंग एमान को भीतर कोटा गोटे आउटपुट डिवाइस नुह प्लॉटर प्रिंटर स्कैनर मॉनिटर एंड नॉन ऑफ दिस एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स द राइट आंसर इज स्कैनर स्कैनर टा गोटे मोर आउटपुट डिवाइस नुह स्कैनर टा होची इनपुट डिवाइस आमे स्कैनर दे कोनोस गोटे फोटोग्राफ हो ड्राइंग हो बा इमेज हो ताको स्कैन करि परिबा एंड सेही फोटोग्राफ बा ड्राइंग बा इमेज रो गोटे पिक्चर फाइल टा कंप्यूटर रे तैयारी होबो से पिक्चर फाइल टा जोटा हम हार्ड मटेरियल आमे धरि थिबा सेटार पिक्चर फाइल जो तैयारी हुए दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट दैट प्रोसेस इज नोन एज स्कैनिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू a dash contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. A dash contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. Option 1, toolbar. Option 2, menu bar. Option 3, window. Option 4, find. And option 5, none of these. Anyone can give the response? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर सेटा को एक्चुअली गोटे टूल बार बोली कह जाए सेथिरे किछि भलो भलो जिंसो को नै कि सजिया जाय थाए जेम हमरो सेव न्यू ओपन किछि किछि बेसिक एक्टिविटी कुडा को जहा कि हमें जनरली फाइल एप्लीकेशन में यूज करू ताकू सजे दिया जाय थाए दैट इज नोन एज ए टूल बार नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू द डैश enables you to simultaneously keep multiple pages on one browser window गोटे ब्राउजर विंडो रे मल्टीपल जिंस को एक्सेसिंग करबा पय ऑप्शन 1 क्या बॉक्स ऑप्शन 2 पॉपअप हेल्पर ऑप्शन 3 कैब रो ऑप्शन 4 एड्रेस बार ऑप्शन 5 एस्केप की एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर टैब रो सेटा टैब रो कहंती कोन कोन हमें वेब पेज को एक्सेसिंग करूचे ठीक टाइटल बार तळ को टैब रो देखिताय एई जिंसोडा का हमें एक्सेसिंग करूचे बा एई जिंसोडा का हमें इंटरनेट रे से वेब ब्राउजर रे फिटेइछि नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस ए डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस ऑप्शन 1 कीबोर्ड ऑप्शन 2 प्रिंटर ऑप्शन 3 मदरबोर्ड ऑप्शन 4 सीपीयू ऑप्शन 5 नॉन ऑफ दिस एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 कीबोर्ड ताले कीबोर्ड होची गोटे इनपुट डिवाइस रे एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए डैश इज a text you want to be printed at the bottom of the page a dash is the text you want to be printed at the bottom of the page option 1 header option 2 endnote option 3 footnote option 4 footer and option 5 none of these that thing is known as footer ताले गोटे पेज रो तळे जो टेक्स्ट को प्रिंट करथाय गोटे पेज रो तळे जो लेखा उडा का आसी थाय ताको गोटे फुटर बोली ही कह जाय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ए डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ए डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस ऑप्शन 1 नेटवर्क option 2 peripherals option 3 expansion board option 4 digital device option 5 none of these which option is the right answer anyone can give the right answer option 1 is the right answer no option 4 wrong answer option 1 network ताले नेटवर्क होची सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर कनेक्शन जेमति कि हमर हब रूटर स्विच ये सब डिवाइस गुडा का यूज करा जाए प्रिंटर सहित कनेक्टेड हेले बा कहा सहित गोटे कंप्यूटर सहित कनेक्टेड हेले जहां पर कि सी जो रिसोर्स शेयरिंग ही पारे तारे जतिटा डिवाइस गुडा का नेटवर्क रे शामिल होंती ताकू गोटे गोटे नोड्स बोली कहंती एंड सेटा को एग्जैक्टली हमें नेटवर्क बोली कहि थाउ ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स The dash tells the computer how to use its components. Option 1 utility,
Option 2, network. Option 3, operating system. Option 4, application program. Option 5, none of these. Which option is the right answer? The dash tells the computer how to use its components. गोटे कंप्यूटर कंपोनेंट्स को केमती यूज करा जीवो ताको कोन बोली कहंती. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. ताको ओएस बोली कहंती, ऑपरेटिंग सिस्टम बोली कहंती. ताले कंप्यूटर कंपोनेंट्स को केमिति यूज करा जीवो सेटा केवल ओएस ही डिसाइड करि थाए. Which of the following function is not performed by the TCP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल द्वारा एमानक भितर को फंक्शनटा हुए नाही. ऑप्शन 1, एड्रेसिंग. ऑप्शन 2, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट. Option 3, data transfer. Option 4, flow control. Option 5, none of these. Which of the following functions is not performed by the TCP? Transmission control protocol द्वारा एमानक भितर कोटा हेई पारे नाही. Addressing, connection of establishment. Option 3, data transfer. Option 4, flow control. And option 5, none of these. None of these होची right answer. None of these माने एमानक द्वारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल द्वारा किछि हेई पारे नाही. Option 5. Next question for you. In addition to keying data directly into the database, data entry can be performed done from dash. Input form. Option 2, table. Option 3, field. Option 4, data directory. Option 5, none of these. Anyone can give the response? The right answer is option 1, input form. ताले हमें कोनोसी डाटा को जतले हमें टाइपिंग करूचे डाटाबेस रे डाटा एंट्री करूचे सेटा को एग्जैक्टली हमें कहिताउ इनपुट फॉर्म. इनपुट फॉर्म माध्यम रे इजीली हमें डाटा एंट्री करि परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द टर्म designates equipments that might be added with the computer system to enhance its. The term that designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality. Option 1, digital device. Option 2, system add-on. Option 3, disk tag. Option 4, peripheral device. Option 5, none of these. Anyone can give the response? The right answer is option 4, peripheral device. कंप्यूटर सहित जो इक्विपमेंट गुडा को लगा जाए, जो जिंस गुडा को लगा जाए जहा कि कंप्यूटर सिस्टम को काम करिया पई बा कंप्यूटर सिस्टम रो कि परफॉर्मेंस करिया पई एनहांसमेंट करथे ताकू माने तार फीचर्स गुडा बढ़ई थाए ताले सेही जिंसडा कहंती हमरो गोटे पेरिफेरल्स बा हार्डवेयर डिवाइस गुडा को पेरिफेरल्स बोली कहंती. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. A CD-RW disk. A CD-RW disk, option 1, has a faster access than an internal disk. Option 2, is a form of optical disk, so it can only be written once. Option 3, holds less data than a floppy disk. Option 4, can be erased and rewritten. Option 5, none of these. Which option is the right answer? A CD-RW disk. What a CD rewritable disk कौन it has a faster access than an internal disk, is a form of optical disk. Option 2, option 3, option 4, option 5. Which option is the right answer? Option 4 is the right answer. Can be erased and retained. ताले हमरो CD-RW रो काम होला बा rewritable रो काम होला ताधरे थिबा इंफॉर्मेशन को हमें काटी देई परिबा पुणी आउथरे नुवा इंफॉर्मेशन लोड कर देई परिबा. Next question for you. The process of changing a written work already done is called. The process of changing a written work already done is called. Option 1, filing. Option 2, editing. Option 3, cutting. Option 4, closing. Option 5, none of these. Which option is the right answer? Option 2 is the right answer. That is known as editing. जो प्रोसेस रे हमें किसी रिटन वर्क करिथिबा and ताको चेंजेस करि परिबा, that thing is known as editing. Next question for you. To make a notebook act as a desktop model, the notebook can be connected to a dash, which is connected to a monitor and other devices. Option 1, bay. Option 2, docking station. Option 3, port. Option 4, network. And option 5, none of these.
Option 2 is the right answer. Docking station. Docking station boli kuhaje. Next question for you. What is the name of the process that is used to convert a series of instructions or program written in a high level language into instructions or a program that can be run a computer? Option 1, assembling. Option 2, compiling. Option 3, translating. Option 4, uploading. Option 5, none of these. Anyone can give the response? Option 2 is the right answer. ସେଇଟାକୁ actually ଆମେ ଗୋଟେ compiling ବୋଲି କହିଥାଉ। ତା ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ series of instruction high level language ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ machine level readable form को convert କରିବ ମାନେ binary form को convert କରିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ computer ରେ actually ଆମେ କହିଥାଉ କଣ? compiling ବୋଲି କହିଥାଉ। Next question for you. What does C represents in MICR? MICR बोलो ଗୋଟେ डिवाइस यूज करा जाए तो सही MICR रे C रो माने कौन? Option 1 code, Option 2 column, Option 3 computer, Option 4 character, Option 5 none of these. Which option is the right answer? Option 4 is the right answer. ताकू कहते character, magnetic ink character recognition. M for magnetic, I for magnetic ink, and C for the character, R for the recognition. Okay, next question for you. On which button does help menu exist? You know, on which button does help menu exist? Option 1 end, Option 2 start, Option 3 turn off, Option 4 restart, Option 5 none of these. Which option is the right answer? Option 2 is the right answer. Start button. Start button रे click कले ही ता धीरे हमर help and support थाए बा help menu थाए. Next question for you. Which of the following is the newest version of Excel among the following? Which of the following is the newest version of Excel among the following? Option 1 Excel 2000, Excel 2002, Excel ME, Excel XP. ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଭର୍ସନ ଗୁଡାକ ଦେଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହଉଛି ଲାଟେଷ୍ଟ? ऑप्शन भितर जोड़ा देछि एक्चुअली 2002 पर XP आसला एक्सेल तो वर्तमान 19 रे पहुंचलानी आसी 21 रे पहुंचलानी भी तो जहां भी हो ऑप्शन 4 टा होची राइट आंसर जो ऑप्शन मानक भितरे एक्सेल XP टा होची लेटेस्ट वर्जन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू डैश प्रोसेस द डाटा एंड इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर डैश प्रोसेसेस द डाटा and is also called the brain of the computer. Option 1 motherboard, Option 2 memory, Option 3 RAM, Option 4 CPU, and Option 5 none of these. The right answer is Option 4 CPU. CPU को ही actually computer का brain बोली कहा जाए. Okay, next question for you. Which of the following are objects that accessed by a database? Which of the following are objects in an access database? Option 1 table form, Option 2 queries reports, Option 3 macros modules, Option 4 all of the above, and none of these. Anyone can give the response? Option 4 is the right answer. That thing सबू तक table भी थाए, form भी थाए, query भी थाए, report भी थाए, macro भी थाए, module गुड़ा का भी थाए. ताले database रे गुड़ा गुड़ा components बा उपादान कहंती. Next question for you. Which area of in an Excel window allows entering values and formulas? Which area in an Excel window allow entering values and formulas? Option 1 title bar, Option 2 menu bar, Option 3 formula bar, Option 4 standard toolbar, and Option 5 none of these. Which option is the right answer? Option 3 is the right answer. Formula bar. Formula bar ही हमें actually value एवं formula उड़ा का enter करी था. Okay. Next question for you. Computer software can be defined as. Computer software can be defined as. The option 1 the computer and its associated equipment. Option 2 the instructions that tell the computer what to do. Option 3 computer components that act to accomplish a goal. Option 4 an interface between the computer and the network. Option 5 the interaction between the computer and its database. Which option is the right answer?
Anyone can give the response? The right answer is option 2. That is known as the instructions that tell the computer what to do. Computer को कौन करिवा को पड़िबो सेटा ही कुहा जाय हमर इंस्ट्रक्शन दबा बा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेटा बोली कुहा जाय. एक्चुअली सॉफ्टवेयर जदि नथिबो ताले गोटे कंप्यूटर सिस्टम काम करि परिबा नै. जेमति गोटे व्हीकल्स को रन करिवा पई पेट्रोल रा आवश्यक अछि, एक्जेक्टली सेमति गोटे कंप्यूटर सिस्टम रा परफॉर्मेंस पई सॉफ्टवेयर आवश्यक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. A dash is a set of rules. A dash is a set of rules. Option 1, resource locator. Option 2, domain. Option 3, hypertext. Option 4, URL. Option 5, protocol. Which option is the right answer? Option 1, resource locator. Option 2, domain. Option 3, hypertext. Option 4, URL. And last is protocol. No, option 5 protocol ठीक. Option 4 टा होची protocol बोली जोटा कहउछे सेटा ठीक आंसर. Which of the following is not an example of hardware? एमानक भितरु कोटा गोटे हार्डवेयर रे एग्जांपल नुह. माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल, none of these. Option 4 is the right answer. Excel. Excel टा गोटे हार्डवेयर नुह. एटा होची गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बाकी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर एगुडा को सब गोटे गोटे हार्डवेयर कंपोनेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट? एमान को भितर कोटा गोटे सिस्टम यूनिट रो पार्ट. ऑप्शन 1 मॉनिटर, ऑप्शन 2 सीपीयू, ऑप्शन 3 CD-ROM, ऑप्शन 4 फ्लॉपी डिस्क एंड ऑप्शन 5 नॉन ऑफ दिस. एनीवन कैन गिव द रेस्पॉन्स? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. सीपीयू. सीपीयू होची एक्चुअली गोटे सिस्टम यूनिट रो पार्ट जोटा कंप्यूटर रा हमें ब्रेन बोली भी कहितो. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. फैक्स मशीन्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स आर एग्जांपल ऑफ. फैक्स मशीन्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स आर एग्जांपल ऑफ. ऑप्शन 1 बारकोड रीडर्स, ऑप्शन 2 आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन 3 स्कैनिंग डिवाइसेस, ऑप्शन 4 पेन बेस्ड सिस्टम्स, ऑप्शन 5 नॉन ऑफ दिस. Anyone can give the response? Option 3 is the right answer. सेगुडा को गोटे गोटे स्कैनिंग डिवाइस बोली कहा जाय. Yes, option 3 is the right answer. Next question for you. When writing a document, you can use the features to find the appropriate word and alternative word if you find yourself stuck of the right word. Option 1 dictionary, option 4 word finder, option 3 encyclopedia, option 4 Wikipedia, option 5 none of these. Anyone can give the right answer? That is known as Wikipedia. ताकू Wikipedia बोली कहंती. Okay. Next question for you. Various applications and documents are represented on the Windows desktop by option 1 symbols, option 2 labels, option 3 graphs, option 4 icons, option 5 none of these. Anyone can give the response? Option 4 is the right answer. That is known as the icons. हम भी just एक पूर्वरु कहिथिले desktop रे एगुडा को थिबो तो एटा होची icon. Which of the following could be digital input device for the computer? एमान को भितर कोटा गोटे डिजिटल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर पाई. ऑप्शन 1 डिजिटल कैमकोडर, option 2 microphone, option 3 canor, all of these and none of these above. Option 4 is the right answer. All of the above is sabu kichi hochi gote input device. Next question. The text box that contains the central electronic components of a computer is option 1 motherboard, option 2 system unit, option 3 peripheral, option 4 input device and last none of these. Anyone can give the response? Option 2 is the right answer. ताकू system unit बोली कहंती. Okay, next question for you. You can use the dash bar to type a URL and display a web page, or type a keyword to display the list of related web pages. Option 1 menu, option 2 title, option 3 search, option 4 web and option 5 address. Anyone can give the response? The right answer is option 5.
address ताको address बोली ही कहती. Next question for you. A dash is a private corporate network used exclusively by company employees. A dash is a private corporate network used exclusively by company employees. Option 1, internet. Option 2, local area network. Option 3, peer-to-peer. Option 4, intranet. And option 5, none of these. Anyone can give the response? Option 4 is the right answer. That is the intranet. Next question for you. A saved document is referred to as. What a saved document को actually कौन बोली कुआ जे? Option 1, file. Option 2, word. Option 3, folder. Option 4, project. And option 5, none of these. Anyone can give the response? The right answer is option 1. ताको गोटे file बोली कहती. Okay, next question for you. Codes consisting of bars and lines of a varying width length. It आसीथिला already. तो सेटा होचे bar code बोली कहती. Next question for you. When cutting and pasting, the items cut is temporarily stored in option 1, ROM. Option 2, hard disk. Option 3, diskette. And option 4, dashboard. And option 5, clipboard. The right answer is clipboard. जेतबेले आमे कोनोसी जिंस को कट करूचे पेस्ट करिवा पई चाहूचे ताले से जो कट कॉपी पेस्ट ए सब एक्टिविटी गुडा को क्लिपबोर्ड रो एक्टिविटी कहंती. तो ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर. क्लिपबोर्ड ताको क्लिपबोर्ड कहंती, नॉट टू 5. क्लिपबोर्ड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज बैकअप? बैकअप रो माने कोन? एडिंग मोर कंपोनेंट्स टू योर नेटवर्क, protecting data by copying it from the original source to be different destination, filtering old data from a new data. Option 4, accessing data on a tape. Option 5, none of these. Anyone can give the response? Data backup means protecting data by copying it from the another original source to different destination. गोटे source रू आउ गोटे source को हमें transfer कर देई परिबा. So that activity known as data backup. Next question for you. Dash are type of inexpensive digital camera that remains the otherboard to a computer and are used for the video conferencing, video chatting, and live web broadcast. Option 1, webcams, webpics, browser cams, browser pictures, and none of these. ताकू webcam बोली कहती. Next question for you. The acronym HTML stands for. HTML माने कौन? Very very simple question. The right answer is option 3, hypertext markup language. ताको hypertext markup language कहती. Option 3 is the right answer. Next question for you. Reference to each file on a disk are stored in a reference to each file on a disk are stored in a option 1, file allocation table. Option 2, root allocation table. Option 3, linking directory. Option 4, root directory. None of these. Option 1 is the right answer. That is known as FAT, file allocation table. Next question for you. What is the correcting error in a program is called? गोटे प्रोग्राम रे एरर किछि थिन ताको करेक्शन करिया पई कोन कहंती? इंटरप्रेटिंग, ट्रांसलेटिंग, debugging, compiling, and none of these. Option 3 is the right answer. ताकू कहंते debugging. Bug means error and debugging means detect the errors and correct these errors. से error गुडा को detecting करिबा and correcting करिबार काम वाला debugging रो. Okay, the time is very short, and with this class I think I discussed many more useful information to you. So this class is over for today, and in the next class I will come with many more attractive questions on knowledge questions for you. Thank you all for joining this class.
देख